Ladies and gentlemen, may I have your kind attention? Our Honorable Minister us any moment now, requesting everybody to take their designated seats and once again requesting for all mobile phones to be put on to silent mode. Thank you. Joining us now, I would request everybody to be seated. All mobile phones put on to silent mode. Ladies and gentlemen, please welcome our Honorable Chief Guest, Sri Narayan Raneji, Honorable Minister for MSME, Government of India. Our guest, Sri Bhanu Pratap Singh Vermaji, Honorable Minister of State for MSME, other distinguished dignitaries. Very warm welcome to each one of you. May I request everybody to be seated, mobile phones to be, the exit doors to be closed, please. Thank you.
Namaskar and good morning. Honorable Chief Guest Shri Narayan Raneji, Honorable Minister for MSME Government of India, Guest of Honor Shri Bhanu Pratap Singh Vermaji, Honorable Minister of State for MSME Government of India, eminent dignitaries, special invitees, representatives from the states, senior officials, respected members of the press and media, ladies and gentlemen. A very warm welcome to the launch of MSME Sustainable ZED Scheme and interaction with the state governments. Ladies and gentlemen, addressing the nation on India's 68th Independence Day, the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji urged the industry, especially the micro, small and medium enterprises of India, to manufacture goods in the country with zero defects and to ensure that the goods have zero effect on the environment. In line with this vision, the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises has launched the MSME Sustainable ZED Scheme for the benefit of MSMEs of India, and QCI is the implementing agency for the scheme. The scheme aims at enabling MSMEs towards manufacturing quality products by inculcating the zero defect and zero effect practices to safeguard the continuous improvement, thereby supporting the Make in India initiative. And ladies and gentlemen, may I now request Shri Atish Singh, Joint Secretary AFI, to kindly do the honors of welcoming and honoring the Chief Guest, the Honorable Minister, by presenting him with a shawl and a green plant. We thank the Honorable Minister for sparing your valuable time in gracing this occasion. We now honor and welcome the Honorable Minister of State, our Guest of Honor, Shri Bhanu Pratap Singh Vermaji. In this occasion, we now honor and welcome Secretary MSME Shri B.B. Swainji. We honor and welcome Chairman Core Board, Shri D. Kuppuramuji. We honor and welcome Additional Secretary Shri Shailesh Kumar Singh ji. Thank you, sir. And we also honor and welcome Secretary General QCI, Dr. R.P. Singh. Thank you, Mr. Singh, for doing the honors. May I now request Shri Atish Kumar Singh ji, Joint Secretary AFI MS, in the proceedings with his welcome address. Over to you, sir. A very good morning to all. Honorable Minister, sir, Honorable Minister of State, Secretary MSME, Additional Secretary and Development Commissioner, Secretary General QCI, dignitaries from the states and union territory governments, fellow officers of the Ministry of MSME, officers of QCI, World Bank, UNIDO, representatives of media, ladies and gentlemen. On behalf of the Ministry of MSME, it is my proud privilege to extend to you all a very warm welcome to the meeting with the states and union territories and the launch of the ZED scheme in its revised formulation. This event is a first of sorts in recent years as we endeavor to bring our efforts and energies together for the higher promotion and growth of the MSMEs. It is appreciated several initiatives and strategies have been developed and rolled out by all states and union territories, and that they run across various sectors and priority areas, and that they offer solutions and stratagem for different traditional and new challenges faced by MSMEs, and that myriad agencies work on that handhold, train and administer these schemes, policies and programs. It is also appreciated that these endeavors and engagement have brought desired delivery and attained the projected trajectory. However, and after everything, you will agree, a lot more needs to be achieved and accomplished in the MSME ecosystem. In the meeting to dwell exactly on that, to build bridges, demolish walls, and fortify the existing linkages. Among other things, and as a first, we need to prevent duplication and overlap. As the nodal Government of India body in this sector,
we tells to work in tandem with all states and union territories, regulators, associations, agencies, and industries to develop a national agenda for the MSMEs by including the entire gamut of issues, challenges, and business bottlenecks on both the demand and supply. Further, we need to learn from each other, replicate success stories, reimagine our programs with a view to making them impactful, coordinate with all agencies to increase the outreach and supply. And most important of all, we must synergize and converge our policies and plans to provide the best possible solutions and at the same time save resources. As part of this agenda, the ministry is proposing to set up a portal of portals wherein all schemes and interventions of the ministry, of the sister departments, of the states, of the regulators, of the agencies are available to all MSMEs across the country with a single sign-on. This would require an integration of all our platforms and programs. I invite all states and union territories to come forward on this and help us take this forward. Further, under the RAMP program, the ministry is hoping to develop a MSME roadmap for all states and union territories through a strategic investment plan. This needs to be a futuristic and a detailed plan wherein funding will be available as gap financing for various projects. The Udyam registration system is also expected to be integrated with all states and union territories. Registration arrangements take up the agenda of inclusion to the next level, but also provide to all MSMEs the benefits and incentives offered by each states and union territories. The MSEFC system needs to be owned by the states. We already had a round of discussions yesterday. We have a number of suggestions and ideas on this. We invite more ideas and suggestions on this particular aspect of the and functioning of the system. Is being launched today with the aspiration of creating MSME champions. The ZED principles adoption will bring in credibility and recognition, sustainability and competitiveness in MSME fiber, superior quality and reduced rejection, and most importantly, increased environmental and social benefits. We have a detailed agenda of 9 items, and I'm hoping we will at the end of the day, through deliberation and discussion, be able to come up with a clear, definitive, smart, and a sharp coordinated plan to improve the MSME sector degree kind of a way. In the end, I would like to just end by the quote, "Unity, not uniformity, must be our aim." Thank you very much. Thank you very much indeed, sir, setting the context for today's launch. And now, ladies and gentlemen, may I invite Shri Vinamra Mishra, Director, Ministry of MSME, for the presentation on the ZED scheme. Over to you, sir. Thank you very much. नमस्कार और गुड मॉर्निंग। आज इस छोटे से एक प्रस्तुतिकरण के माध्यम से हम अपने MSMEs जो हमारे इस प्रोग्राम के साथ हज़ारों की संख्या में जुड़े हुए हैं वर्चुअल माध्यम से, उनको हम इस स्कीम के बारे में कुछ मुख्य बातें बताते चलेंगे और किस तरह से ये स्कीम उनके सहायता गई है और उनको क्वालिटी और एनवायरनमेंट फ्रेंडली होने के दिशा में एक कदम होगा, उसके ऊपर ये एक छोटा सा एक प्रस्तुतिकरण है। लाल किले की प्राचीर से हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने हमारा आह्वान किया था कि हम हमारे छोटे उद्यमियों के लिए एक क्वालिटी और एनवायरनमेंट फ्रेंडली पॉलिसी बनाएं, उनको ना केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिल सके। और ये स्कीम जेड सर्टिफिकेशन स्कीम उसी दिशा में मंत्रालय का एक कदम है। हमारे माननीय मंत्री महोदय के मार्गदर्शन में हमने ये प्रोग्राम आज लॉन्च कर रहे हैं और इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम आपको इस स्कीम के अप्रोच के बारे में बताएंगे, इस स्कीम के क्या मुख्य बिंदु हैं उसके बारे में बताएंगे, जेड सर्टिफिकेशन और इसके साथ जो MSMEs को तरह तरह के बेनिफिट्स और इंसेंटिव्स मिलेंगे उसके बारे में बताएंगे। नेक्स्ट, इस स्कीम का जो विजन है वो ये है कि किस तरह से हमारे MSMEs को हम प्रतिस्पर्धात्मक बना सकें, कॉम्पिटिटिव बना सकें और उनको हम सस्टेनेबिलिटी प्रदान कर सकें, जिससे कि वो ना केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बना सकें। और इसमें एलिजिबिलिटी उन MSMEs की है जो उद्यम रजिस्ट्रेशन से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऐसे करीब 80 लाख MSMEs हैं जिन्होंने अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन में अपना रजिस्ट्रेशन करा के रखा है। ऐसे ये जेड सर्टिफिकेशन पे रजिस्ट्रेशन फ्री है और उसके बाद उन्हें विभिन्न पैरामीटर्स के ऊपर अपने आप को कंफर्म करना होगा और उसके बाद ये सर्टिफिकेशन उन्हें मिल पाएगा। ये स्कीम का जो बैकग्राउंड है, जो इसका
परिदृश्य है पीछे का, उसमें हम इन 4 मुख्य बातों को लेकर चल रहे हैं। इसमें पहली मुख्य बात यह है कि हमने नवाचार, नए आइडियाज़ को लेकर हम इस स्कीम में आ रहे हैं। इस हिसाब से कि हम किस तरह से राज्यों को भी अपने साथ लेके चलें, किस तरह से हमारे विभिन्न संगठन जो MSME सेक्टर में काम कर रहे हैं उनको भी साथ लेकर के चल सकें, तो उससे हमारा इस स्कीम का कार्यान्वयन और स्मार्ट हो सकेगा। यूनिफाइड और कोऑर्डिनेटेड अप्रोच, जब हम लोग साथ में मिलकर कॉमन गोल की तरफ एक सिंगल टारगेट की तरफ बढ़ेंगे, तो हमारा एक कोऑर्डिनेटेड, एक समन्वय के साथ एक अप्रोच रहेगा, उसके साथ ये स्कीम हम और आगे लेकर जाएंगे। और ये जब सारी चीज़ें होंगी तो इस स्कीम का फैलाव, इस स्कीम की आउटरीच बहुत आगे तक होगी और हमारे छोटे से छोटा उद्यमी भी इसका लाभ उठा सकेगा। इस स्कीम को Z सर्टिफिकेशन जो स्कीम है, इसको दो फेजेज में बांट के रखा गया है। पहला फेज जो आज हम लॉन्च कर रहे हैं, इसमें हम केवल विनिर्माण क्षेत्र, जो मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र है, उसकी MSMEs को हम इसमें रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेशन कर रहे हैं। फेज 2 में हम ऐसे MSMEs जो कि सर्विस सेवा क्षेत्र में भी कार्य कर रहे हैं, वो उनको भी हम लेके आएंगे। उसके लिए भी जो विभिन्न पैरामीटर जिसके ऊपर हम उनको कंफर्मिटी दे सकें, उनको हम जज कर सकें कि वो क्वालिटी हासिल कर पाएँ, उसको हम लोग फेज़ 2 में लेकर के आएंगे। साथ ही साथ फेज़ 2 में हम अपने MSMEs को किस तरह से निर्यात के लिए उनको हम संगठित बना सकें, उनको हम उपयोगी बना सकें, तो उसमें एक एक्सपोर्ट का भी एक बिंदु हम लेकर के आएंगे, वो फेज़ 2 में होगा। आज हमारा जो फेज़ 1 का जो लॉन्च है, ये मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में जो हमारे MSMEs हैं उनके लिए है। ये जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं जिन्होंने हमारे इस स्कीम को लेकर के आए हैं और किस तरह से इसको हम आगे लेकर से, जिसमें हमारा मंत्रालय एक है, हमारा जो इस स्कीम का जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, मुख्य इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होगी, वो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है, क्योंकि उन्हें ही इस पूरे भारतवर्ष में क्वालिटी को आगे बढ़ाने का एक मैंडेट प्राप्त है। इसलिए क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया हमारा इस स्कीम का पार्टनर है और हम उनके साथ इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करेंगे पूरे देश में। हमारे पूरे देश में बहुत सारे MSME डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट और डेवलपमेंट ब्रांचेस, इस तरह के करीब 63 पूरे देश के कोने कोने में हमारे MSME DIs फैले हुए हैं। वो हमारे इस स्कीम को छोटे से छोटे और सुदूर MSME तक पहुंचाने में मदद करेंगे। इस स्कीम के जो विभिन्न पैरामीटर जिनके ऊपर सर्टिफिकेट, उसमें हमारी मदद ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने की है, BIS ने हमारी मदद की है। हम स्टेट गवर्नमेंट्स के आज जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी आए हैं, हम उनको भी हमारे साथ लेकर रखा हुआ है, क्योंकि हमने इन सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों में हमारे एक नोडल अधिकारी का चयन किया है और राज्य सरकार हैं जो कि हमारे इस स्कीम को अपने राज्यों में आगे लेकर जाएंगे। माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज इस स्कीम के लाभार्थी होंगे, इसलिए वो स्टेक होल्डर्स हैं। और विभिन्न इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस जो कि पूरे भारत में हमारे करीब 100 से अधिक इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस जो कि हमारे मंत्रालय द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हैं, वो भी हमारे साथ इसमें आगे लेकर हम चलेंगे। और साथ ही साथ इस स्कीम में बहुत सारे ऐसे इंसेंटिव्स और बेनिफिट्स डाले गए हैं जो हमें दूसरे मंत्रालयों ने भी दिए हैं, जैसे कि रेलवे हो गया, जैसे हमारे PIIT हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हो गया। ऐसे कई मंत्रालय हैं जिन्होंने हमारे इस स्कीम में बहुत सारे इंसेंटिव्स दिए हैं जिससे हमारे MSMEs को लाभ प्राप्त हो सके। अब इस नए स्कीम के बारे में आपको जायज़ा देते चलेंगे। इसमें 3 सर्टिफिकेशन लेवल हैं। इसमें जो 3 सर्टिफिकेशन लेवल हैं, इसमें MSMEs जो है वो कंफॉर्मिटी मॉडल, अगर उनको जिस पैरामीटर पर हम जज करेंगे, उनको असेस करेंगे, अगर उनके पास वो पैरामीटर है तो उनको सर्टिफिकेशन मिलेगा। अगर उनके पास नहीं है तो हम करेंगे कि किस तरह से वो पैरामीटर वो उसे अचीव कर सकें। और इसमें एक और ख़ास बात यह है कि अगर MSME को ऐसा लगता है कि उनके पास सीधे जितने हमारे पैरामीटर्स जो कि हमने उनको अपने वेबसाइट के माध्यम से हम बताएंगे, वो सारे पैरामीटर्स वो लगभग अचीव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, तो गोल्ड रजिस्ट्रेशन की तरफ जा सकते हैं। तो इसमें जो 3 रजिस्ट्रेशन लेवल है, ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड। गोल्ड में हम हमारे सबसे अधिक पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर हम असेसमेंट करेंगे। वो अगर किसी MSME को लगता है कि वो उसके हिसाब से वो तैयार है तो वो सर्टिफिकेशन भी ले सकता है। वो ब्रॉन्ज भी ले सकता है, सिल्वर भी ले सकता है, एक के बाद एक भी ले सकता है, या सीधे सिल्वर भी ले सकता है, या सीधे गोल्ड भी ले सकता है।
और इसको हम लोगों ने 20 पैरामीटर, पहले हमारी जो स्कीम थी उसमें 50 पैरामीटर्स थे, जो कि हमारे MSMEs और हमारे एसोसिएशंस ने हमें इस बात की जानकारी दी कि ये 50 पैरामीटर्स हासिल करने बहुत मुश्किल होते हैं। तो उन 50 पैरामीटर्स को हम लोगों ने 20 पैरामीटर्स में सजोया है, ये मानते हुए कि क्वालिटी, एनवायरनमेंट, सेफ्टी, इन सब के ऊपर किसी भी तरह का समझौता ना हो। पैरामीटर्स जो हैं वो हम लोगों ने ऐसा भी कई बार ऐसा होता है कि कई MSMEs के पास क्वालिटी सर्टिफिकेशंस होते हैं, ISO सर्टिफिकेशंस होते हैं, तो वो कई बार ये सवाल भी उनके मन में रहता है कि अगर हमारे पास ISO सर्टिफिकेशन है तो हमारे क्वालिटी का तो जायज़ा हो चुका है। तो हमने इस स्कीम में इस बात की सुविधा रखी है कि अगर आपके पास विभिन्न ISO सर्टिफिकेशन हैं या हमारे मंत्रालय के कुछ अन्य सर्टिफिकेशन या अन्य प्रोग्राम्स आपके यहाँ, तो आपके कुछ पैरामीटर्स को ये मान लिया जाएगा कि आपने उसको कंफर्म कर दिया है। तो इस तरह से हम एग्जिस्टिंग सर्टिफिकेशंस को मान्य मानते हैं अपने पैरामीटर को असेस करने में, जब हम ZED सर्टिफिकेशन की बात करते हैं। इसमें शुरू में MSME को एक ZED प्लेज लेनी पड़ेगी रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात। ZED प्लेज लेने के पश्चात ये जो प्लेज है ये पूरी तरह से फ्री है और उसके पश्चात वो रजिस्टर कर पाएंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया, इस स्कीम में बहुत सारे नए बेनिफिट्स और इंसेंटिव्स हैं और इसमें पारदर्शिता को रखने के लिए हमने इसमें वर्चुअल असेसमेंट, जियो टैगिंग करी है, और भी क्योंकि आज हम कई बार फिजिकल ट्रेनिंग नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में वर्चुअल ट्रेनिंग, डिजिटल ट्रेनिंग का भी माध्यम से हम लोगों ने इसको इस स्कीम में हमने वो अवेयरनेस और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रखे हैं। और साथ ही साथ असेसमेंट भी हम लोगों ने कुछ हद तक अब सिल्वर सर्टिफिकेशन लेवल तक हम लोगों ने वर्चुअल असेसमेंट का भी कार्यक्रम रखा है। नेक्स्ट, ये 3 सर्टिफिकेशन लेवल है, ZED ब्रॉन्ज, ZED सिल्वर और ZED गोल्ड। इसमें ZED ब्रॉन्ज में आपको ZED प्लेज लेनी है और सर्टिफिकेशन लेवल हासिल करना है। ZED सिल्वर में आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, प्लेज लेंगे और उसके बाद आपको एक MSME कवच, जो हमारा मंत्रालय सारे MSMEs के लिए एक कोविड की प्रिपेयर्डनेस, कोविड में आप कितने तैयार रहेंगे, कितने आप तैयार हैं और उसकी दिशा में किस तरह से आप अपने उद्यम को किस तरह से ठीक करें, बेहतर करें, उसके ऊपर हम 15 अलग अलग पैरामीटर्स पे आपको हम जज करेंगे और उसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि किस तरह से आप अपने आप को कोविड के हिसाब से, महामारी या इस तरह के पैंडेमिक अगर आपको भविष्य में भी आए तो किस तरह से आपकी प्रोडक्टिविटी और सेफ्टी और क्वालिटी के ऊपर फ़र्क ना पड़े। इसके लिए हम एक कवच, MSME कवच का एक सब कंपोनेंट, एक उप योजना भी इसमें लेकर आ रहे हैं, जिससे और यह योजना मैं आप सभी के इन्फॉर्म करता हूँ कि यह योजना पूरी तरह से फ्री है, निशुल्क है और इसको कॉम्प्लीमेंटरी एक उप योजना के रूप में हम इसमें लेके आ रहे हैं। और इसके बाद लास्ट और सबसे जो बड़ा सर्टिफिकेशन है वो ZED गोल्ड का है, जिसमें हम कुल 20 पैरामीटर्स को हम आंकेंगे, असेस करेंगे और उनको हम ZED गोल्ड सर्टिफिकेशन देंगे। ZED गोल्ड सर्टिफिकेशन के बाद नेक्स्ट स्लाइड, ये वो पैरामीटर्स हैं जो हम विभिन्न सर्टिफिकेशन लेवल पर हम जिसका आकलन करेंगे। ZED ब्रॉन्ज, इन 5 बिंदुओं पर आपका आकलन होगा। इसमें सेल्फ असेसमेंट है, आप अपने आप का खुद असेसमेंट करें। वेबसाइट इसके लिए बहुत यूज़र फ्रेंडली बनाई जा चुकी है, वो आज हमारे मंत्री महोदय के कर कमलों से अनावरण होगा। और इसमें जैसे ही आप इन 5 पैरामीटर्स को कंफर्म करेंगे, आपको ZED ब्रॉन्ज सर्टिफिकेशन मिल जाएगा और ZED ब्रॉन्ज मिलते ही आप जो बहुत सारी बेनिफिट्स और इंसेंटिव्स हैं उसके हकदार होंगे, जो हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। इसी तरह से ZED सिल्वर में हम कुल 14 पैरामीटर्स का आकलन करेंगे, असेसमेंट करेंगे और उसके कंफर्मिटी के बाद उसको कंफर्म होने को ZED सिल्वर सर्टिफिकेशन देंगे। और अंत में ZED गोल्ड, जैसा मैंने बोला, 20 जो हमारे पैरामीटर्स हैं उसका आकलन करने के बाद ZED गोल्ड सर्टिफिकेशन देंगे। जो बेनिफिट्स हमारे MSMEs को इन सर्टिफिकेशंस के साथ प्राप्त होगा, सबसे पहला ZED की जो स्कीम है, इसमें इनबिल्ट जो हमारे फ़ायदे हैं वो हमारे MSMEs को किस तरह से क्वालिटी में अच्छा करेंगे, किस तरह से रिजेक्शन रेट उनका घटेगा, किस तरह से उनके रेवेन्यू आगे बढ़ेंगे, उनका एनवायरमेंटल और सोशल जो बेनिफिट्स है वो उनको फ़ायदा मिलेगा। साथ ही साथ जब आपके पास ZED सर्टिफिकेट होगा तो जिस भी लार्ज कॉरपोरेट के साथ आप काम कर रहे हैं या बाज़ार में आपकी क्रेडिबिलिटी, आपकी पहुँच और आपकी रिकॉग्निशन कुछ बढ़ेगी, क्योंकि आप ZED सर्टिफाइड होंगे। और साथ ही साथ आपको एक
रिस्पॉन्सिबल एंटरप्राइज उद्यमी बनने का भी एक तमगा मिलेगा, जिससे आपकी बाजार में पहचान आगे बढ़ेगी। इसमें और इंसेंटिव्स, जैसा मैंने एमएसएमई कवच के बारे में बताया, ये एक नॉलेज एंड असेसमेंट प्रोग्राम है जिसमें कि हम कोविड के प्रतिरोधक क्षमता के बारे में हम उद्यमियों को असेस करेंगे, आकलन करेंगे और उन्हें हम गाइड करेंगे कि किस तरह से आप इस तरह की किसी अन्य महामारी या आपने जिस महामारी को अभी झेला है उसमें हम किस तरह से और ठीक कर सकें अपने उद्यमों को, उसको हम आगे लेके जाएंगे। ये इसका एक इंसेंटिव है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ग्रेडेड इंसेंटिव्स, इसमें तरह तरह के इंसेंटिव्स ना केवल हमारे मंत्रालय के विभिन्न प्रोग्रामों कार्यक्रमों के इंसेंटिव्स दिए गए हैं, बल्कि कई लाभ हम लोगों ने जो विभिन्न अलग मंत्रालय और भी मंत्रालय हैं उनके भी कई लाभ राज्य सरकारों से हम लोगों ने लगातार मीटिंग्स करके उनके जो राज्यों में विभिन्न लाभ एमएसएमई रजिस्टर्ड जो राज्य सरकारों के साथ रजिस्टर्ड हैं उनको जो लाभ मिलते हैं, वो अगर आप जेड सर्टिफिकेशन के थ्रू सर्टिफिकेशन हासिल कर लेंगे तो वो भी लाभ मिलेंगे। और ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड में ग्रेडेड इंसेंटिव्स आपको मिलेंगे। गोल्ड को सबसे ज़्यादा इंसेंटिव्स मिलेंगे और सिल्वर को उससे कम, और सबसे शुरुआती लाभ जो है वो जेड ब्रॉन्ज को मिलेंगे। जो फाइनेंशियल असिस्टेंस इस स्कीम में है उसमें जो सर्टिफिकेशन का कॉस्ट है उसके ऊपर सब्सिडी है। जो एमएसएमईज ने अपने यहाँ टेस्टिंग के सर्टिफिकेशन, सिस्टम प्रोडक्ट सर्टिफिकेशंस लिए हुए हैं, उसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस और रीइंबर्समेंट है। आपने एक सर्टिफिकेशन लेवल हासिल किया, अब आप उसके ऊपर आगे अगर आपने ब्रॉन्ज सर्टिफिकेशन हासिल किया, आप सिल्वर की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए हैंड होल्डिंग हमारे कंसल्टेंट्स के द्वारा आपको दी जाएगी और उसके ऊपर जो कॉस्ट होगा उस पर सब्सिडी होगी। और साथ ही साथ अगर इस क्रिया में आपको कुछ टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने के लिए कुछ परचेज मशीनरी टेक्नोलॉजी का परचेज करना है तो उसके लिए भी आपको हम सब्सिडी प्रदान करेंगे। नेक्स्ट, जो सर्टिफिकेशन है उसमें सबसे पहले जैसे ही आप जेड प्लेज और जेड रजिस्ट्रेशन करेंगे आपको 10,000 रुपये का एक ज्वाइनिंग रिवॉर्ड मिलेगा। ये 10,000 रुपये ही की कीमत ही है जेड ब्रॉन्ज सर्टिफिकेशन की। तो हम ये मान सकते हैं कि जेड ब्रॉन्ज अगर आपको हासिल करना है तो आपको कंप्लीटली फ्री जेड का ब्रॉन्ज सर्टिफिकेशन मिल जाएगा, क्योंकि 10,000 रुपये का ही वो सर्टिफिकेशन लेवल है। इसके बाद हम लोगों का जो सर्टिफिकेशन का जो कॉस्ट है 10,000, 40,000, और वो हम लोगों ने 80, 60 और 50% माइक्रो के लिए 80% सब्सिडी, स्मॉल के लिए 60% और मीडियम के लिए 50% सब्सिडी रखी है। साथ ही साथ सर्टिफिकेशन की कॉस्ट में अगर आप विमेन एंटरप्राइज हैं, SC/ST एंटरप्राइज हैं, या आप हिमालयन रीजन में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एरिया में, या आप आइलैंड टेरिटरी में रहते हैं, या एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में आपका MSME उद्यम है, तो आपको एक्स्ट्रा 10% बेनिफिट सब्सिडी का मिलेगा सर्टिफिकेशन कॉस्ट पे। साथ ही साथ हमारे मंत्रालय में CDP और स्फूर्ति की स्कीम भी चल रही है। इसमें इंटरऑपरेट है, इसलिए अगर आप स्फूर्ति और CDP में शामिल हुए MSME हैं तो आपको एक्स्ट्रा 5% बेनिफिट मिलेगा। तो अगर हम ऐसे इसको जोड़ करके देखें तो अगर आप एक माइक्रो एंटरप्राइज हैं और आप वुमेन ओन्ड या SC/ST या हिमालयन रीजन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के हैं और आप स्फूर्ति या MSE CDP का प्रोग्राम भी आपने अपनाया हुआ है, तो आपको केवल 5% सर्टिफिकेशन का ही कॉस्ट देना पड़ेगा। 95% तक की सब्सिडी हम आपको प्रदान करेंगे। फाइनेंशियल असिस्टेंस, जैसा मैंने बताया, सर्टिफिकेशन कॉस्ट और टेस्टिंग सर्टिफिकेशंस पे 50,000 तक का एक फाइनेंशियल असिस्टेंस हम देंगे, और किसी एक सर्टिफिकेशन पे अप टू 75% जो आपका उसका कॉस्ट है उसमें 50,000 को देंगे। जैसा मैंने बताया, हैंड होल्डिंग सपोर्ट, जिसमें आप सिल्वर ब्रॉन्ज हैं तो सिल्वर बनना चाहते हैं, सिल्वर है तो गोल्ड जाना चाहते हैं, उसके लिए अगर आपको कंसल्टेंसी बेनिफिट्स की ज़रूरत है तो हैंड सपोर्ट के रूप में हम आपको 2 लाख रुपए की फाइनेंशियल असिस्टेंस और देंगे। और साथ ही साथ अगर इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपको किसी प्रकार की टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट में आपको कुछ प्रोक्योरमेंट या कुछ ऐसी खरीद फरोख्त करनी है तो उसके लिए भी हम आपको 3 लाख रुपए तक का फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे। नेक्स्ट, हमारा नेशनल कोऑपरेशन स्कीम है जिसमें हमारे उद्यमी कहीं भी बाहर जाकर अगर अपना एग्जीबिशन करना चाहते हैं तो उनको स्टॉल चार्जेस में, एयर फेयर में और फ्रेट चार्जेस में हम देख सकते हैं। ब्रॉन्ज हैं, सिल्वर हैं और गोल्ड हैं तो आपको किस तरह से ग्रेडेड बेनिफिट्स 50,000, 1 लाख और 1 लाख स्टॉल चार्जेस में, एयर फेयर में 25,000, 50,000 और 75,000, और इसी तरह से फ्रेट चार्जेस में भी हम 10,000, 15,000 और 25,000 फ्रेट चार्जेस में सब्सिडी देंगे। साथ ही साथ हमारी मंत्रालय बहुत जल्द एक
MSME डिजिटल स्कीम लॉन्च करने जा रही है और उसमें एनुअल सब्सक्रिप्शन विभिन्न स्तरों का होगा, जिसमें डिजिटल ब्रॉन्ज सब्सक्रिप्शन, डिजिटल सिल्वर सब्सक्रिप्शन और डिजिटल गोल्ड सब्सक्रिप्शंस होंगे। ये सारे के सारे अगर आप ब्रॉन्ज जेड ब्रॉन्ज सर्टिफिकेशन हासिल किए हुए हैं तो आपको डिजिटल ब्रॉन्ज जो सब्सक्रिप्शन है वो फ्री होगा, वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा। सिल्वर डिजिटल सिल्वर सब्सक्रिप्शन जो है वो सिल्वर रेटेड जेड सर्टिफिकेशन के लिए कॉम्प्लीमेंट्री होगा, फ्री होगा, और साथ ही साथ गोल्ड के लिए गोल्ड आपको फ्री मिलेगा। इसी तरह से हमने अन्य मंत्रालयों के साथ और बैंक्स के साथ, क्रेडिट ब्यूरो के साथ भी विस्तार से चर्चा करके, रेलवे से हमको पार्सल फ्रेट के चार्जेस में व्यापार माला एक्सप्रेस चलती है, इन सब में हमको जेड सर्टिफिकेशन की जो सर्टिफाइड MSMEs होंगे उनको फ़ायदा मिलेगा। बैंक ने कई बैंकों ने आज हमारे साथ हाथ में हाथ मिलाया है और कंसेशन प्रोसेसिंग फ़ी पे कंसेशन दिया है। साथ ही साथ जो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके ऊपर भी कुछ कंसेशंस देंगे और उनको लेंडिंग में सपोर्ट करेंगे, क्योंकि जो रिस्क असेसमेंट होगा, अगर आप जेड रेटेड एजेंसी होंगे, जेड रेटेड MSME होंगे तो आपको क्रेडिट में जो उसमें भी आपको सपोर्ट मिलेगा। साथ ही साथ जो क्रेडिट रेटिंग होती है उसमें भी हमने विभिन्न क्रेडिट ब्यूरोज के साथ बात करके और हमने क्रेडिट रेटिंग किस तरह से जेड सर्टिफाइड MSMEs की इम्प्रूव होगी उसके लिए हम लोगों ने बैकग्राउंड में ये सारा वर्क करके रखा हुआ है और आपको ये सारे फायदे होंगे। इसी के साथ मैं इस प्रस्तुतिकरण को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। Thank you very much indeed. And ladies and gentlemen, after that very informative presentation on the Z scheme, we now invite to share experiences on this, inviting Mr. KP Sharma, Vice President, International Quality, Schneider Electric. Over to you, sir. Honorable Minister of State MSME, and I'm happy to meet you after many years. I met you in Maharashtra when we started our factory from previous company, and other dignitaries on the dais from MSME, Quality Council of India, all respected dignitaries from the states, and some of my friends from industry. Me from Schneider Electric, say international means we are managing about 80 countries in international. Like Schneider is a global company where we have operations all over the world, starting North America, Europe, China, and international. And before going to this subject, I just want to share with you is like I'm very proud, like, you know, we are running international operations of 80 countries from India. So it means we have our global supply chain head here. We have many vice presidents sitting in India. I was there in Singapore for some time, but after that we are running all operations from here. You see globally today, the business models are changing, the industry is changing, and specifically the manufacturing end-to-end complete business model are changing. And after COVID situation, where we saw so many challenges, bottlenecks, I guess digitization and digitalization. When we are talking about Make in India, some of you know, specifically my friends from Andhra, Maharashtra, Karnataka, Uttarakhand, where we have heavy base of our industries. Today we have 40 factories in India, and if you know, we have also acquired L&T Electrical and Automation in Schneider, and from MSME. We were having only COGS, means manufacturing, of about 300 million euro in 2011, 12, 13. But Make in India and many new initiatives, I'm happy to share with you today, we are running about 1.2 billion euro of COGS in India. It means it just doubled in the last 3-4 years. Our CEO, Mr. John Pascal, few days ago in India, he further announced we are going to increase this by 100% more in coming few years in India, and specifically in the state of Andhra Pradesh and Tamil Nadu, 7 or more other states. Having said that, I guess when we are growing from India, where 60% is export to 120 countries, and we know when you have to export products to US, France, all those important markets, how quality plays a bigger important role. If we are growing here, 6 years ago we had a big workshop in India, and one of the discussion was how we should have Make in India, and first point was what is the supplier quality, but also ZED
ZED has played 20 MSMEs are exporting to France, North America, 16 countries. And when we visit them, we feel proud. They are saying, we are exporting to US, we are exporting to France. And why they are able to export? Because their quality levels have come up. I guess no, we are at a place as an internet more about India because I'm responsible for those countries. But as an Indian, when we are in this kind of MNC, we want to make it sure how to bring technology which is available in China, in North America, and France, and make available in India. I should just bring in the attention of our Honorable Minister. UNO have approved 8 global factories which they call lighthouse factories. Means you are top of the notch factory, and one of the factory in India is Schneider Electric, and that is in ma'am your state in Hyderabad. So it means they have an extensive program. People from UNO came to the factory and all those things. When I saw this program, QCI, Zero Defect Zero Effect, the phase 2, I'm happy to see like a lot of changes has been done, because if there's capability, our MSME's capability, digital is going to play a big role. And once again, in my opinion, we should give a huge round of applause to QCI for their wonderful, first in phase 1 and phase 2 now. Now, I guess what Schneider can do here, as I said, we have already digital model available. We will work with QCI to implement some of those lighter version of which we call IoT machine learning solutions to our MSME. Good news is, already in about 100 such suppliers, we have taken this initiative. And some of them we are working with the QCI with those kind of suppliers. So I guess digitization is very good. And whenever I was visiting our suppliers, last 3 weeks I was being suppliers, they were asking about financial assistance. And I'm really, really happy to see the presentation from Mishra ji, like we are putting a lot of subsidies, not only on training, certification, also on the digital equipment and all. So we will go more bit deeper. But my point, we were having IoT machine learning solution, vision testing solution, and I'm happy all those guys are also MSME in Pune and some of the other states who are making this solution. So once again, from Schneider, we are really happy kind of programs are coming. We are committed to India. We are committed to make in India. We are committed to this MSME to work more closer. And once again, thanks to all state governments and the centers in Schneider. Our JPT met Prime Minister Modi a few days ago. And I guess then he also addressed back to inside the company, like we have full support from the government and let's move on. So we are there to support any state who want to bring your government officials or private sectors to our factories. I guess it's good to arrange those kind of visits in Hyderabad, in Bangalore, and some of those factories. We can share the best practices with you so that we can visualize what kind of digitalization is happening. But sorry to say, like we are talking too much on digitization, but when we go to the ground, I guess we have to work more closer there, more at the ground. Thank you so much. All the best, and really appreciate our Honorable Minister and dignitaries to being present in this quality, which is more on the quality. But in the end, I can say zero defect, zero effect, but on the Schneider and our customer, we had a positive effect and impact on our business. And we will keep pushing Make in India. Thank you so much. Thank you so much. God bless you guys. Thank you very much indeed, sir, for sharing your experiences. I'm sure it will be motivating for the MSMEs. And now, ladies and gentlemen, we present a video message by the Secretary General of African Organization for Standardization, ARSO, Dr. Hamuddin N. Sengimana. Distinguished delegates, honorable ministers, launch of upscaled Zero Defect Zero Effect ZED. I would like to take this opportunity to praise India, the government of India, and actually the Quality Council for India for this achievement. We have been part as the African Organization for Standardization, part of this initiative. Looking back in 2016,
when we started collaborating with QCI. I would like to recall also Central Secretariat had a training on ZED. This training helped the Africa Organization for Standardization to develop and strengthen, which is a certification for sustainability standards in agriculture, tourism, forestry, and when you look back, we are now also upscaling our ecomark to other areas such as mining, textile, and energy. Looking at this upscaled Z, I think we will also have a very important the indicators that you are looking at. I got opportunity to go through some document on the upscaled system and linking to what we are currently doing on the continent with the Africa Continental Free Trade Area. That started last year in January for its implementation. We need to see how we have signed the MOU with the AFCFTA Secretariat last year on 17th November 2021. That MOU is on the implementation for the AFCFTA, especially annex on non-tariff barrier, annex on TBT, and annex on SPS. I look forward to see how we can help each other as brothers. I once stated that when you look at the population of Africa, actually we have a similar population, around 1.3 billion of people. We need to work close history together. We can learn about what you do, and you can also learn about what you are doing on the continent. Lastly, I would like to mention that we have reviewed ARZO strategic plan for 2022-2027 and the inclusion of industry, helping for the quality culture and industrialization on the continent is key in this new strategic plan 2022-2027. I look forward to interact with you more and within this strategic plan. I congratulate you once again for the launch of this upscaled Z. Thank you. Thank you very much indeed. And ladies and gentlemen, so present with us today is an MSME entrepreneur of the Z scheme, Mr. Sanjeev Singh, MD Gillard Electronics. Gillard, ladies and gentlemen, was Diamond certified in the previous Z scheme. And over to you, Mr. Sanjeev Singh, to kindly share your story. Thank you, ma'am. Good morning, respected Shri Narayanji, Pratabji, Honorable Ministers, senior members from the Ministry, Industry, Media, ladies and gentlemen. Like she mentioned, I am Sanjeev Singh, and a small company, small MSME in Punjab, Mohali. And I've been invited here only because I got a diamond rating in the previous Z scheme from the Government of India, MSME. This was 3 years ago. This Z scheme was through the Punjab government when the Industries Department asked us to apply for this scheme. And at that time, just out of curiosity, I went to the net and to see that what this scheme is all about. And so, hats off to QCI. I was very impressed by this scheme, the method that I adopted, in which they had taken about those 30 different parameters, and they were judging on different levels of maturity. So the parameters are very important, and the levels at which they had worked out maturity, because maturity takes time to set in and needs a lot of efforts to get to that level. I've been working in quality systems, software development, and digitization for more than 30 years. When we got certified first time for ISO 9001, that was in 1996, that time the systems were very, very skeletal. Even the ISO 9001 standards are very skeletal in nature. But later on, over the last so many years, 2.5 decades, we went through other certifications like ISO 14000 and then OSAS, now ISO 45000. And we worked very closely with companies like Toyota, Honda, Bosch, Schneider, Ford, etc.
And all these things, there was a lot of learning for us with working with these companies. And because we were being serious on digitization since the last 30 years, we started working on an ERP in 1987, when the word ERP was not even coined. And over these years, over the skeleton of ISO 9000, we were able to add a lot of muscle and flesh to make things solid. What was pleasing about the ZED scheme, that it had captured all the good points of good practices the world over. They were talking of lean manufacturing, they were talking of waste reduction, they were talking of 5S systems, Swachh Bharat, which we are saying, and social responsibilities, how to work at maintain good work relations with your employees, stakeholders, all those things. Like, this is, again, when we went for this audit, it was very cakewalk for us, because all the questions we just had to tick, and we were already there. So we didn't need any consultation from anyone outside to get things going. Now, when I look at it, the prime areas which are being promoted by our PM sir, they are digitization, they are, skill India, they are talking of zero defect, zero effect, and all are these points which have actually helped us go through the journey. He's talking of Atmanirbhar Bharat. In our journey of our company is 60 years old, and our journey has been in that level only, where we've been focusing on import substitution. We have been very, very, inclined towards process systems and all those activities. Now, if I just talk of the MSMEs are there. We don't have very many SMEs right now here, but I'm sure the message will go across to them. The MSE's problem, which I see as what is happening, is that the MSE, the first generation leaders who started the MSME about 30, 40, 50 years ago, they were very motivated people, they were very passionate people, and they really had superhuman strength to do a lot many things at one time. And they could get the industries to one level of working. They could not convert all whatever they're doing into documented processes, procedures, to convey it down to the next generation. The entire system stayed as a person-dependent system, not as a system-dependent organization. And because of lack of that thing, they were unable to grow and they were unable to survive also. The second generation, when they wanted to enter this business, and when they saw their fathers working like a human dynamo from one point to another and not achieving the desired results, they would get intimidated and they prefer to opt out. Especially Punjab, they say, we want to go to Canada, we go for employment, we go for a job somewhere. We can't sustain the kind of work that our father has been doing. So this is where I feel that ZED scheme is very, very important, because it fills that gap, wherein it will convert those MSMEs, which are at the moment person dependent, into units which would be system dependent, and wherein they will be able to sustain themselves, they will be able to grow further, they'll be able to skill people and all those things. So ZED scheme, we see the points mentioned about advantages we gain. These are very small gains which have been shown here. Actually, if you look at it, the ZED schemes comes with a lot of collateral benefits. I just mentioned here, the first thing is it improves your work culture. It improves your work culture. Like after we got the ZED scheme, we immediately applied for working for a Great Place to Work, and we cakewalked through that also. We became the Great Place to Work. We got awards for Best Manufacturing Unit, Best Place to Work for 4 different categories. We got digitization things going. We are a demo case for Industry 4.0, a small company which understands what is the meaning of Industry 4.0, because we've been working in it for the last so many years. All the software development has been done in-house. And what we feel is that Industry 4.0 is again a very good key point in which it can help achieve ZED also, and further help the MSME grow further. I would like to mention here is that going for Industry 4.0 is not an expensive or not a very difficult thing to go. It has become a big hype, which makes it look very difficult, but believe me, what I feel is it is not. There are very simple ways of going about it in a very cheap, economical way, and the benefits which can drive are fantastic. So that is what I would like to say. I would like to address my MSME fraternity and tell them that, the government has already shown the, intent by launching this kind of a scheme in which they want to promote you and make you go further. So now it is, the time that we take the ownership on us and go for it, commit to improve,
And if we go for the start with getting the bronze medal, it costs us 10,000 rupees, which is again refunded back to us. It puts us in an area where we can go for silver and gold. Immediately we are open to get consultancy for 2 lakhs, ERP system upgradation for 3 lakhs. Put them across in place and you get streaming to your gold, free of cost and benefits for lifelong. So I don't see any reason why any MSME would not like to take up this, scheme immediately and work according to it. And I believe that MSMEs being the backbone of the industry and the ZED scheme becomes a backbone for the MSME industry, it can lead to a great and a manufacturing India. Thank you, sir. Thank you very much indeed, sir, for sharing your experience. And ladies and gentlemen, as we all are aware, QCI is an autonomous body of the Ministry of Commerce, Government of India. And the Z division of QCI leads various projects of national importance with a focus on Atmanirbhar Bharat. And may I now invite Dr. Ravi P. Singh, Secretary General Quality Council of India, for his address. Over to you, sir. Thank you, ma'am. Honorable Minister, sir, Minister of State, the Secretary, Additional Secretary and Development Commissioner, and our 2 stalwarts who have done tremendous amount of work, Atish ji, Vinamra ji, and all my representatives from the states. We are extremely happy that the vision the Prime Minister gave to this country has in fact progressed over the years, and it has come to this stage where we have made Z as a much more easier, nimble, and a system which removes to some extent the inspection Raj, or we aspire to remove the inspection Raj from the ecosystem in which the MSMEs operate. One of the important things that I want to say is that while we went around implementing Z to the MSMEs, 4 or 5 things were told to us. One was access to capital or credit. The second was people, skilled people to work in the MSMEs, availability of raw material, innovation in plant and machinery, and access to market. This particular upscaled system of Z, in fact, answers a lot of these problems that the MSMEs face on a day-to-day basis. In fact, it is going to be an aspirational certification for a lot of MSMEs, and eventually we hope that it will remove the compliance burden from the collective conscience of this country as far as MSMEs are concerned. Why I'm saying that is, we tried extremely hard to implement Z initially, but the uptake, as Singh Saab said, as Schneider said, was very low, primarily because everybody felt was that this was a very good scheme, but it was not easy to implement at the MSME level. We have tried to inculcate a concept of quality versus cost of doing business. And that should be the most important focus of this upscaled Z scheme. The other is that in order to remove regulations in the long run, like our Honorable Prime Minister says all the time, in fact, yesterday when interacting with the states, he took a very random example which struck us, that hospitals must do safety audits because there are a lot of fire incidents happening. Now look at the vision of the person. He's trying to get you to a system by which such kind of voluntary audits, voluntary certifications can remove in the long run these regulatory compliances. Z is that kind of a model. If you can show, like Mr. Singh said, that once they adopted Z, everything was a cakewalk. This is what we want to establish. Once you have adopted Z, no regulatory compliance must be necessary for MSME to operate their business.
What you have done today, Ministry of MSME, I am extremely thankful to you, because these are the states and they will have to, MSMEs exist in the tier 2, tier 3 markets. When we were doing ease of doing business, we only concentrated on the metro cities. But ease of doing business in the MSME sector belongs to tier 2, tier 3 and tier 4 sectors within the states. And therefore, the states will have to come forward, include it in their industrial policy and promote it as an aspirational certificate under the banner of MSME. And last but not the least, I would like to tell you with lot of pride, ZED is an indigenous scheme. ZED is Atmanirbhar Bharat. ZED is one nation, one standard, and how you are promoting it, Honorable Minister Sir, is exceptionally brilliant. Let me finally tell that lot of people have contributed. From the initial days when Kalraj Mishra ji was there as the Honorable Minister, then Giriraj Singh ji was there, then Nitin Gadkari Sahab was there, and then Rana Sahab is there. Thank you very much for supporting this initiative, and this has come to this stage where it can scale up and speed up. Thank you very much. Thank you very much indeed, sir, for that noteworthy address. And now, ladies and gentlemen, I have the privilege in inviting Shri B.B. Swain, Secretary MSME, for his address and to throw some more light on the ZED scheme. Over to you, sir. Honorable Minister MSME, Sir Narayan Raneji Sahib, Honorable Minister of State, Manu Pratap Singh Barmaji, esteemed speakers, dear friends, dignitaries, ladies and gentlemen. Gives me immense pleasure to be present during the launch of MSME Sustainable ZED Certification Scheme. MSMEs are considered to be the growth engines of the economy, and the sector has been contributing significantly to the economic and social development of the country by fostering entrepreneurship, generating large employment opportunities, and complementing large industries as ancillary units, thereby contributing significantly in the inclusive industrial development of the country. In today's context, MSMEs must enhance their capabilities and competitiveness. In order to prepare the MSMEs of India to create a global value chain, it's important that quality and competitiveness of Indian MSMEs are enhanced over a period of time. This scheme will provide an opportunity for the units to continuously strive to improve its processes. This would also ensure that the large companies investing in India have a ready-made vendor ways to support their activities and an expensive base of trained human capital who can contribute to the manufacturing process. ZED, I believe, is a win-win proposition. The ministry has been working relentlessly to address the challenges of the MSMEs through its various schemes and interventions. MSME Sustainable ZED certification is one of the key interventions of the ministry to assist MSMEs enhance their capabilities and competitiveness. ZED certification is dedicated to the micro, small and medium enterprises of India and has been designed keeping in mind the intricacies of the MSME sector, which aims to assess, certify and handle the MSMEs. The ZED certification not only aims to assess and certify the MSMEs, but also handle them to enhance their competitiveness. The scheme comes with immense benefits and incentives for our MSMEs, and incentives from various stakeholders like the states, UTs, financial institutions, etc. My specific request at this point of time is to request our colleagues from the states to popularize this wonderful initiative of the ministry. We are sure that the government's vision of making India not only Atmanirbhar but also a sought-after business destination will bear fruit. With the help of all stakeholders, ZED is expected to be a game changer and improve the MSMEs landscape of India. It gave me great pleasure to listen to excellent stories and experiences from you, sir, from Snyder. And I heard with a great pleasure what Mr. Sanjeev Singh had to tell about his experiences. Mr. R.P. Singh, of course, elaborated how the scheme has been kind of undergone a lot of change to make it more popular.
I'll probably end here with what Mr. Sanjeev Singh said. He said that from a person dependent kind of a concept, for the second generation it needs to be probably system dependent. I think that's a very, very well said statement. We'll end at that. Ladies and gentlemen, my best wishes and thank you for your attention. Thank you very much indeed, sir. और अब निवेदन है माननीय राज्य मंत्री MSME श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा जी से कि वह उपस्थित सभा को संबोधित करें। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत MSME के लिए जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट ZED सर्टिफिकेशन स्कीम के शुभारंभ के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हमारे केंद्रीय मंत्री MSME श्री नारायण राणे जी, सचिव MSME मंत्रालय श्री BV स्वान जी, कार्य बोर्ड के चेयरमैन आदरणीय श्री D कप्पू रामू जी, ASNDC MSME श्री शैलेश कुमार सिंह जी, JS MSME श्री आतिश सिंह जी, JS अलका अरोरा जी, JS मर्सी अपाऊ जी, यहाँ उपस्थित सभी विभिन्न प्रदेशों से आए हुए प्रिंसिपल इंडस्ट्री सेक्रेटरी एवं अधिकारीगण, अन्य देशों से आए हुए अतिथिगण, यहाँ उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, विशेष रूप से आज ZED सर्टिफिकेशन स्कीम है उसका उद्घाटन हमारे जो MSME है, हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है इसमें एक और विकास के लिए बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ेगी। MSME न केवल अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देती है बल्कि कृषि के बाद दूसरा सबसे अधिक रोजगार सृजन करने वाला क्षेत्र यही है। यह एक स्तर पर विकास को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करने वाले MSME ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में मौजूद हैं। बढ़ती आबादी और युवाओं की एक बड़ी संख्या के साथ MSME क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने, अधिक से अधिक उद्यमी तैयार करने तथा मौजूदा MSME को आगे बढ़ाने हेतु उन्हें सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है। इससे हमारे युवाओं के लिए रोजगार और अधिक अवसर उपलब्ध होंगे। यह तभी हो सकता है जब हमारे MSME द्वारा निर्मित उत्पाद की मांग बढ़े। जो उत्पादित वस्तु की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। हमारे MSME को यह महसूस करना चाहिए कि आज बहुत सारी जानकारी आसानी से उपलब्ध होने के कारण उपभोक्ताओं के पास कई विकल्प हैं। साथ ही बढ़ती आय के साथ आकांक्षाएं बढ़ रही हैं और उपभोक्ता सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पादन खरीदना चाहते हैं। यह स्थिति हमारे MSME के लिए बड़े अवसर लेकर आई है। जैसे जैसे अवसर बढ़ रहे हैं, MSME को एक बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं और बेहतर तकनीक का पालन करके वह ऐसा कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए उन्हें अपने कर्मचारियों को बेहतर तरीके से विकसित करने की भी आवश्यकता है। हालांकि MSME अपनी गुणवत्ता में सुधार हेतु उचित समर्थन दिशा निर्देश पाने के लिए संघर्ष करते हैं। MSME से जुड़े लोगों की इस कठिनाई का संज्ञान लेते हुए हमारे मंत्रालय की तरफ से अनेक योजनाएं एवं कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।
इनमें से एक MSME सस्टेनेबल जेड सर्टिफिकेट योजना है, जिसका आज उद्घाटन किया गया है। हमारे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम के लिए विशेष रूप से बनाया गया है। यह एक अनूठा सर्टिफिकेशन योजना है। यह सर्टिफिकेशन योजना MSME को सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने हेतु उचित मार्गदर्शन करेगा, जिससे उन्हें अपनी प्रक्रियाओं को सुधारने और बेहतर करने में मदद मिलेगी। इस सर्टिफिकेशन योजना में हमारे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को उनकी प्रक्रिया में सुधार करने और सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू करने का प्रावधान है, जो MSME निर्मित वस्तु की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करेगा। यह सर्टिफिकेशन MSME की उस प्रथाओं को अपनाने को भी प्रोत्साहित करता है जो पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव को कम करेंगे। हमारे MSMEs के लिए विभिन्न प्रोत्साहन के द्वार भी खोलेगा, ताकि वे अपने उत्पादन का परीक्षण करवा सकें, स्वच्छ प्रौद्योगिकी को अपनाने में सक्षम हो सके और कई अन्य प्रोत्साहनों का लाभ प्राप्त कर अपनी कार्य क्षमता एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि कर सकें। मैं MSME से बड़ी संख्या में आकर इस सर्टिफिकेशन को प्राप्त करने का आग्रह करता हूं, जो हमारे MSME द्वारा निर्मित उत्पाद में अधिक विश्वास पैदा करने में मदद करेगा। इससे स्थानीय और वैश्विक स्तर पर उत्पादों की मांग बढ़ेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि मंत्रालय की इन पहलों से हम अपने MSMEs के लिए विश्व स्तर के उत्पादों के विनिर्माण हेतु एक परिस्थिति तंत्र बनाने में सक्षम होंगे, ताकि भारत में निर्मित प्रत्येक उत्पाद अपनी गुणवत्ता के लिए जाना जाए, जो न केवल भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा, बल्कि यह माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी की कल्पना के अनुसार वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में देश को स्थापित करने में भी मदद करेगा। मैं अपने सभी MSME के जेड सर्टिफिकेट्स को अपनाते हुए जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट प्रथाओं का पालन करने के लिए ही मंत्रालय की अन्य योजनाओं का भी लाभ उठाने के लिए आमंत्रित करता हूं, क्योंकि इन सभी योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय MSME को चैंपियन बनाने में मदद करेगा। विशेष रूप से मैं जानता हूं कि MSME मंत्रालय विशेष रूप से ढेर सारी योजनाओं के साथ अपना काम कर रहा है, और विशेष रूप से मैं पुनः सभी का स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हार्दिक धन्यवाद, आपके प्रोत्साहन के लिए हार्दिक धन्यवाद। और अब निवेदन है माननीय मंत्री MSME भारत सरकार श्री नारायण वानी जी से कि वे अपने कर कमलों द्वारा MSME सस्टेनेबल जेड स्कीम एवं जेड एंथम का अनावरण करें। और जोरदार तालियां MSME सस्टेनेबल जेड स्कीम के अनावरण पर माननीय मंत्री जी के कर कमलों द्वारा। एक बार मैंने लाल किले से कहा था, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। हमारा प्रोडक्ट रत्ती भर भी डिफेक्ट वाला नहीं होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में क्वालिटी मैटर करती है। और दूसरा, आज दुनिया एनवायरमेंट कॉन्शियस है, तो जीरो इफेक्ट, एनवायरमेंट पे जीरो इफेक्ट, ये तो ऐसे मॉडल है जो हमें दुनिया में क्वालिटी के कारण और ग्लोबल वार्मिंग के सामने चुनौतियों को निपटने के रास्ते के कारण हमें स्वीकार कर सकता है। अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है हमारे छोटे उद्यम, जिन्हें हम MSMEs के नाम से जानते हैं। और आज जरूरत है इन MSMEs को एक सही मार्गदर्शन की। भारत सरकार के MSME मंत्रालय ने देश के इन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की कार्यकुशलता सुदृढ़ करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जो उन्हें ग्लोबल कॉम्पिटिशन के लिए तैयार करेंगे और भारत को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक होंगे। MSME सस्टेनेबल जेड सर्टिफिकेशन स्कीम उनमें से एक ऐसी पहल है जिसमें पर्यावरण का दृष्टिकोण रखते हुए MSMEs की उत्पादकता, दक्षता और गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए एक सुनियोजित कार्य प्रणाली की रचना की गई है। Z यानी जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट सर्टिफिकेशन स्कीम एक सरल और पारदर्शी सर्टिफिकेशन है, जिसके 3 स्तर हैं: ब्रॉन्ज, सिल्वर एवं गोल्ड, जो गुणवत्ता, सुरक्षा, उत्पादन, स्वच्छता, ऊर्जा, पर्यावरण इत्यादि परिभाषित मानकों पर आधारित है।
Z सर्टिफाइड MSMEs केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा घोषित कई इंसेंटिव्स का लाभ भी उठा पाएंगे। समय आ गया है कि हम अपनी क्षमता, योग्यता और सूझबूझ से एक उन्नत और प्रगतिशील भारत का निर्माण करें। सर्टिफिकेशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन करवाएं और साथ मिलकर एक आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करें। So, ladies and gentlemen, that was the very motivating Z anthem, which is going to be the MSME anthem from now onwards. And we would like to inform everybody, was sung by the famous singer Kailash Kher. And now, ladies and gentlemen, we would present a short film, MSME Speak, which has short bites from few of our MSMEs who have come forward and adopted the Z scheme. The largest plastic manufacturer and exporter in India, Z rating will help us recognize our efforts towards a more sustainable manufacturing environment and manufacturing practices. What is important is that the government should promote this Z certification nationally and internationally and make it acceptable to maximum number of customers. मेरा हमेशा मानना ये रहा है कि मैं एक MSME एंटरप्रेन्योर होने के नाते अपने से पूछता हूँ कि मेरा उद्देश्य क्या है मेरे जीवन का। वो केवल ये है कि कुछ पूंजी है मेरे पास या मेरे परिवार के पास या बैंक्स में, उस पूंजी को किस तरह से मैं जॉब्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ये मेरा मेन उद्देश्य। जेड जैसी सोच इम्प्रूवमेंट पैरामीटर्स हमको इसको एफिशिएंट बनाने में उसी 100 रुपए से, पहले हो सकता है मैं 1 लाख रुपए से एक जॉब क्रिएट करता हूँ, अब हो सकता है 1 लाख रुपए से मैं 2 या 5 या 10 जॉब क्रिएट कर सकूँ। तो मेरा मानना है कि जैसे जैसे हम ग्लोबली कॉम्पिटिटिव होते जाएंगे ये एफिशिएंसी और बढ़ती जाएगी। यदि हम एडिटिंग कर लें तो हमारे लिए बहुत सारे सर्टिफिकेशन में जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सिस्टम ड्राइवर है जेडीटी के माध्यम से इतनी सारी गाइडलाइन हमें मिली है। उस गाइडलाइन को पढ़ने के बाद में हमारे को ऐसा लग रहा है कि हाँ उससे हमारे प्रोडक्ट का इम्प्रूवमेंट जरूर होगा। हम गाइडलाइनों के अनुसार यदि डॉक्यूमेंटेशन करते हैं तो वो डॉक्यूमेंटेशन हमें कहीं बहुत सारे फायदे दिखा रहा है, तो इससे मार्केट में हमारा बहुत अच्छा एक वैल्यू बनेगी और कस्टमर को हम एक अच्छी तरह से अच्छा प्रोडक्ट दे पाएंगे। बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। जैसे से पहले हम जो भी सर्टिफिकेशन लिए होगा किसी को अपने मतलब बहुत अच्छे से हम बता सकते हैं और दूसरे को गाइड भी कर सकते हैं कि इतना हम परफेक्ट हो गए, ये हमारा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, हमारा कॉन्फिडेंस देगा। जेड सर्टिफिकेशन अपने खुद के बेटरमेंट के लिए है, उसमें किसी और का बेटरमेंट नहीं है। काफ़ी चीज़ें हैं जो एक एमएसएमई को इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट कटिंग हर एक्सपेक्ट क्या मदद करेगी। हम जैसे छोटे छोटे जो लोग हैं, हमारे प्रोडक्ट को हर आदमी एकदम विश्वास नहीं कर पाता, लेकिन विश्वास दिलाने के लिए एक जेड सर्टिफिकेट हमारे पास आ गया, और इससे क्या है कि हमारे पूरे कस्टमर्स हैं जो लोग हैं हम पर और हमारे प्रोडक्ट पर विश्वास करने लगेंगे। Anything is available in India, those are coming from abroad.
or from domestic market. If any material is accepted in India, definitely that has a standard of international standard, because you have the scope for bringing from UK, USA, Germany, China, like that. And if I compete there, and if I sell our product from here to Delhi or Bombay or Chennai or Bangalore, then definitely that product is equal to the international standard. जितने भी क्वालिटी में कंसेप्ट आए हैं जिनको पर हमारा हमने काम किया है, बीट सिक्स सिग्मा, बीट काइजन, बीट ISO और TQM, ये सारे कंसेप्ट हमारे इंडिया से बाहर से आए। But I'm very much happy कि ZED एक कंसेप्ट आया है, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट, जो प्योरली इंडियन है, जो रियली रिप्रेजेंट मेक इन इंडिया का है। ZED हमारे हिसाब से बने, हमारी जरूरत के हिसाब से बने। हमें इसको इतना आगे बढ़ के सपोर्ट करना चाहिए कि वर्ल्ड में, और मानी जैसे मैं बोला है कि मदर ऑफ सर्टिफिकेशन है, दिस इज रियली है, उससे हमारा देश, हमारे प्रोडक्ट का नाम पूरी दुनिया में एक हीरे की तरह, मोती की तरह अलग चमकेगा। और अब निवेदन है माननीय मंत्री MSME भारत सरकार श्री नारायण राणे जी से कि वे उपस्थित सभा को संबोधित करें। जेड सर्टिफिकेशन स्कीम के शुभारंभ अभी हुआ है। इस शुभारंभ कार्यक्रम में उपस्थित MSME के राज्य मंत्री आदरणीय भानु प्रताप सिंह वर्मा जी, आदरणीय BB स्वैन जी सेक्रेटरी, कोर बोर्ड के चेयरमैन D कुप्पूरामू जी, विकास आयुक्त शैलेश सिंह जी, अतीश सिंह जी सेक्रेटरी, श्रीमती अलका अरोरा जी, RP सिंह सेक्रेटरी जनरल, उसी तरह इस शुभारंभ कार्यक्रम में जिन्होंने अपने विचार रखे वो आदरणीय KP शर्मा जी, सम्मानीय हरमोजीत जी, आदरणीय सचिव सिंह, आदरणीय RP सिंह, उसी तरह उपस्थित सभी अधिकारी, आदरणीय मर्सी एपाओ, KPMC टीम के सभी सदस्य, उपस्थित भाई और बहनों और दोस्तों, MSME के लिए आज अच्छा एक खुशी का, गर्व का दिन है। MSME भारत देश के अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख रोल निभा रही है। हम MSME भारत की GDP में 30% योगदान देते हैं, एक्सपोर्ट में 50% योगदान दे रहे हैं। MSME के माध्यम से 11 करोड़ से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिला है। टोटल उद्यमी 6 करोड़ 30 लाख है हमारे देश में, और हम चाहते हैं कि हमारे देश के पंतप्रधान MSME के ऊपर जो भरोसा रखते हैं कि हम हमारा भारत आत्मनिर्भर बनने के लिए MSME का योगदान बड़ा होना चाहिए, ऐसा उनको कहना है। हम इसलिए कोशिश में लगे हैं कि हमारा भारत आत्मनिर्भर बनने के लिए माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री में हमें मोटे प्रमाण में, बड़े प्रमाण में
प्रोडक्शन बढ़ाना है, क्वालिटी अच्छी रखनी है और हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ना चाहिए। इसलिए हम नई नई योजना, नई नई टेक्नोलॉजी हम लाना चाहते हैं और हमारे उद्यमी तक पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। उसका आज एक हम जो जेड सर्टिफिकेट स्कीम लाई है उसका एक भाग है। मैंने हमारे विनम्र मिश्रा जी ने जो जानकारी दी तो मैं वो मुद्दे वापस रिपीट नहीं करता। आप लोग ने भी सेम मुद्दे रखे हैं जेड के बारे में। क्वालिटी में सुधार करने के लिए, उत्पादन निर्मित को बढ़ावा देने के लिए, प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, पर्यावरण पर कंट्रोल करने के लिए हमें जेड सर्टिफिकेट इस योजना का लाभ होगा। और इसका सब आप लोग ने स्वागत भी किया है, जेड का आप लोग ने स्वागत किया है। मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। हम आप लोग को इनवाइट इसलिए किया हूँ कि ये जो नई नई स्कीम हम ला रहे हैं उसके बारे में आप लोग को जो तजुर्बा होगा, जानकारी होगी, वो सरकार तक, एमएसएमई के अधिकारी तक आनी चाहिए और उसमें और क्या सुधार कर सकते हैं प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, जीडीपी बढ़ाने के लिए, आत्मभारत निर्भर बनाने के लिए, तो हमें मार्गदर्शन हो सके। इसलिए आप खास आप लोग को इनवाइट हमारे एमएसएमई के माध्यम से किए हैं और आप लोग यहाँ आकर जो मार्गदर्शन दिए हैं, जो विचार रखे हैं, कुछ सजेशन भी आप लोग ने किए हैं, इस आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। और हमारे तरफ से, एमएसएमई के तरफ से, जैसे हम कोरोना के टाइम पे हमारे पंतप्रधान जी ने बड़ा योगदान दिया देशवासियों को, नागरिकों, उद्योजकों, व्यवसायिक हो, सभी क्षेत्र के लोगों को उन्होंने 20 लाख करोड़ का एक पैकेज दिया, 20 लाख करोड़ का। कई लोगों के लिए, गरीबों के लिए अनाज दिया, 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया। 1,80,000 करोड़ रुपए का अनाज उन्होंने लोगों तक पहुंचाया, 1,80,000 करोड़ का। और मैं समझता हूँ काफी योजना भी उन्होंने दी, जैसे हमारे एमएसएमई को उन्होंने जो स्कीम दी है, वो स्कीम हम स्मॉल, माइक्रो और मीडियम जो उद्यमी है, कोरोना में उनका बिजनेस एकदम डाउन हुआ था, काफी माइक्रो हमारे सूक्ष्म उद्योग बंद हुए थे, तो उन्होंने एक क्रेडिट गारंटी स्कीम लाई। उसमें उन्होंने इस साल 5 लाख करोड़ रुपए का फंड एमएसएमई के लिए रखा है। इसका हम सही उपयोग करेंगे और एमएसएमई में जो भी उद्योजक है, जो रजिस्टर करते हैं, उनको हर तरह का मदद, योगदान हम देंगे और आप लोग का भी मार्गदर्शन का उपयोग करेंगे। और मैं ये चाहूँगा कि आत्मनिर्भर भारत बनेगा, उसमें हमारे एमएसएमई का बड़ा योगदान होगा और इसलिए हमारी कोशिश आगे रहेगी। आज जेड का सर्टिफिकेट का आज ने शुभारंभ किया है, वो उसका एक पार्ट है, उसका एक भाग है, ऐसा हम मानते हैं। इसलिए आप ज़्यादा आपसे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं देना, कि ऑलरेडी आप लोग सबने दिए, विनम्र ने तो बहुत डिटेल में सब जानकारी दे चुके हैं। और हम एक ही चाहते हैं, पंतप्रधान जी की घोषणा और उनकी इच्छा पूरा करना एमएसएमई का हर अधिकारी का कर्तव्य बनता है। वो अच्छा तरह से निभा रहे, इसके हमारे अधिकारियों पर मुझे गर्व है। और हम भारत के उद्योजक हर बात में भारत सरकार के सोच में हमेशा
अप्रिशिएट भी करते हैं, सजेशन भी करते हैं। इसलिए आज आप लोग आए, मार्गदर्शन किए, सजेशन किए, इसलिए आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। आपके प्रेरणात्मक संदेश और प्रोत्साहन के लिए हार्दिक धन्यवाद। और अब धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करना चाहेंगे एडिशनल सेक्रेटरी एंड डेवलपमेंट कमिश्नर MSME श्री शैलेश कुमार सिंह जी। Honorable Minister, sir, Honorable MOS, sir, respected Secretary, sir, and all other respected and distinguished participants of this launch event. It is a pleasure to propose the vote of thanks before this august House. First of all, I would like to thank Honorable Minister for providing us the leadership in all the work that we are doing for assisting the MSMEs. I am sure this scheme will help MSMEs to upgrade themselves to face challenges which have been thrown by and which are being thrown by global competition. Next, I would like to place on record my sincere thanks to Minister of State for gracing the occasion and motivating the MSMEs to go for ZED certification. I thank Secretary MSME, under whose leadership and guidance this scheme has been formulated. I thank all the respected additional chief secretaries, principal secretaries, and secretaries of the states who've come here. We all know that the states have a very important role in the implementation of this scheme. I would also like to extend heartfelt thanks to all officials of the ministry and the QCI team who have worked so hard in the formulation of this scheme with thoughtful deliberations. After obtaining inputs from various organizations like the BIS, the World Bank, UNIDO, EESL, NPC, SIDBI, banks, financial institutions, other ministries, etc. I thank Shri KP Sharma ji from Schneider, our industrialist friend Shri Sanjeev Singh ji, and Dr. RP Singh ji from QCI for so eloquently enlightening us about the benefits of this certification. I congratulate and thank the team led by Shri Atish Singh ji, Joint Secretary, who has made, and Vinamr Mishra ji, who have made this scheme and the event a grand success. Finally, I would also like to thank all the stakeholders who have contributed in the arrangements of this memorable launch event. And I would be remiss if I don't thank all our MSME friends who are participating in this event in the virtual mode from all over the country. Thank you very much. Thank you very much indeed, sir, for kindly proposing the vote of thanks. And ladies and gentlemen, with that we move on to the session 2, which is meeting with principal secretaries of states and the union territories. And to carry forward the proceedings of this session, I hand over to Shri Vinamr Mishra ji, Director, Ministry of MSME. Over to you, sir. Thank you very much. पिछली जो हमारा अभी लॉन्च हुआ है सर, आपने अभी अनावरण किया हमारे पोर्टल का, तो हमारे पास कुछ डाटा आ चुका है रजिस्ट्रेशन का। और इसके लिए हमारे मंत्रालय ने विभिन्न तरह के प्रचार प्रसार अभियान शुरू कर दिया था करीब हफ्ते भर पहले से ही, और आगे हम अगले 15 दिनों तक हम और प्रचार प्रसार करेंगे। तो आपके
अनावरण के बाद सर अभी तक ऑलरेडी 1032 MSME ने रजिस्टर कर लिया है सर, और उनमें से 128 MSME ने अपने सर्टिफिकेट का पेमेंट भी कर दिया है सर कि उन्होंने ये सर्टिफिकेट लेना है। तो सर ये आप सबको की जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ। अगली मीटिंग हमारी जो राज्य सरकार के हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण आए हैं उनके साथ विचार विमर्श है। मैं अनुरोध करता हूं, क्योंकि ये क्लोज डोर मीटिंग है, हमारे मीडिया के मित्रों से कि ये क्लोज डोर मीटिंग है, मीडिया के मित्रों के लिए लंच का प्रबंध है और एक छोटा सा अनावरण हमारे लोगों का किया जाएगा लंच के जस्ट पहले, तो वो बाहर की तरफ फॉयर में किया जाएगा। तो मैं अनुरोध करता हूं कि हमारे मीडिया के मित्र जो हैं वो इस मीटिंग और ये वेबकास्ट जो इस लॉन्च फंक्शन का हो रहा था, वेबकास्ट भी डिसकंटिन्यू हो जाएगा। लाइव जो वेबकास्ट हो रहा था, कृपया उसे भी डिसकंटिन्यू कर दें।